कुआला लंपुर, द हसलिंग बसलिंग कैपिटल ऑफ मलेशिया, और एक ऐसी जगह जो आप अपने मलेशिया ट्रिप पे मिस कर ही नहीं सकते। वैसे तो बहुत लोगों के लिए कुआला लंपुर सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है टू एंटर द कंट्री एंड विजिट अदर प्लेसेस, बट आई ऑनेस्टली फेल दैट देयर इज सो मच टू डू इन कुआला लंपुर इटसेल्फ। मैं रिसेंटली गई थी सिंगापुर से मलेशिया वाया बस, एंड मलेशिया पे एक डिटेल्ड गाइड विद रिस्पेक्ट टू फ्लाइट्स, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, बजट, ये सब मैं एक रिलीज करने वाली हूँ वीडियो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू विल गेट नोटिफाइड। बट कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आई फील लाइक कुआला लंपुर हैज समथिंग फॉर एवरीवन, एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 7 थिंग्स दैट यू मस्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू आर इन कुआला लंपुर एंड द प्लेसेस दैट यू विल हैव टू विजिट टू एक्सपीरियंस दोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप कुआला लंपुर आते हो, यू सी दी स्काई स्क्रेपर्स एंड देयर इज ऑब्वियसली अ सिटी वाइब टू इट। सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज द एक्सपीरियंस द मेट्रोपोलिस लाइफस्टाइल। उसके लिए आप विजिट कर सकते हो Petronas Twin Towers, which are also the highest twin towers in the world, and it's kind of a symbol of Malaysia, of Kuala Lumpur. So आप वहाँ जा सकते हो। उसके टॉप पे जाने के लिए there's a sky bridge, there's an observation deck। उसकी टिकट I think 80 मलेशियन रिंगिट के अराउंड पड़ती है। एंड मैं टॉप पे नहीं गई थी, मैं Petronas Towers पे नहीं गई थी, लेकिन आई एम श्योर दैट इट मस्ट बी ऑफरिंग अ ग्रेट व्यू ऑफ द सिटी। इंस्टेड ऑफ दैट आई चोज टू गो ऑन टॉप ऑफ द KL टावर, विच इज अनदर सिंबल ऑफ कुआला लंपुर। एंड KL टावर पे टॉप पे एक रेस्टोरेंट है विच इज़ अ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। तो बोनस ये रहता है कि आप खाते खाते एक बहुत ही अच्छा व्यू ले सकते हो जो चेंज होता रहेगा। एंड आई फील लाइक द बुफे वॉज सो वर्थ इट, एंड टेक इट फ्रॉम अ वेजिटेरियन हु हैड लिमिटेड ऑप्शंस एंड येट इज सेइंग दैट। लेकिन अगर आप 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म कर दो दे कैन एक्चुअली हैव मोर वेजिटेरियन ऑप्शंस फॉर यू। वो अरेंज कर सकते हैं आपके लिए, वो मुझे रिसेप्शन पे पता चला, बट मेरा आज यहाँ लास्ट डे है, सो आई कांट डू दैट। बट इफ यू आर वॉचिंग दिस in advance, make sure you ask them for more vegetarian options. जो बुफे का प्राइस है उसमें ऑब्जर्वेशन डेक भी अगर आप इंक्लूड करो तो 99 मलेशियन रिंगिट यानी कि 1800 इंडियन रुपीज़ में पड़ जाता है। एंड आई फेल्ट दैट इट वाज क्वाइट अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। एंड येस, आई हाईली रिकमेंड यू टू गो टू KL टावर, एंड लेट मी एक्चुअली शो यू सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई हैड ओवर देयर। ओके, सो वेज पास्ता बनाने के बाद हमने बनाया है वेज, of course, samosa pav or samosa bun. There are so many ingredients, you can actually make your own lunch if you're a vegetarian, and this is so good. इन सब के साथ साथ वहाँ पे काफ़ी सारे मॉल्स हैं, जैसे कि सम हाई एंड मॉल्स लाइक सूर्या KLCC, पवेलियन। सो यू कैन गो टू दीज मॉल्स एंड एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ कुआला लंपुर। नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज टू एक्सप्लोर द रिलीजियस प्लेसेस इन कुआला लंपुर। तो मलेशिया में भी बहुत से डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एक साथ रहते हैं। इंडियंस, चाइनीज, मलेज, आप बहुत सारे बहुत डाइवर्सिटी देखोगे कल्चर में, एंड द सेम इज रिफ्लेक्टेड इन द रिलीजियस प्लेसेस ओवर देयर। सो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, यू कैन एक्सप्लोर द जामेक मॉस्क विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क in the city. फिर बहुत से डिफरेंट टेम्पल्स हैं जहाँ आप जा सकते हो। इनफैक्ट मैं मॉस्क नहीं जा पाई थी बिकॉज आई वॉज अ लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम, बट देयर इज दिस वन प्लेस दैट आई रियली वांट टू रिकमेंड यू, एंड दैट्स कॉल्ड बाटू केव्स। बाटू केव्स सिटी से थोड़ा सा दूर जाके, यानी बस एक आधे घंटे की टैक्सी राइड आपको पहुँचा देगी। आप मेट्रो भी ले सकते हो वहाँ जाने के लिए। बट बाटू केव्स पहुँच के देयर इज दिस वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड मुरुगन। देयर इज अ हिंदू टेम्पल ओवर देयर। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड अ हिंदू टेम्पल आउटसाइड ऑफ इंडिया। एंड नॉट जस्ट दैट, फिर एक बहुत ही कलरफुल स्टेयर्स है वहाँ पे, एंड ऊपर जाके यू सी मोर टेम्पल्स, यू सी केव्स, एंड इट्स रियली फैसिनेटिंग। एंड और भी बहुत से टेम्पल्स हैं विद इन सिटी, जैसे श्री महामरियम्मम जो कि आई थिंक सिटी का ओल्डेस्ट टेम्पल है। देन देर इज थियान हो टेम्पल। सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस यू कैन एक्सप्लोर, एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड फीलिंग when you visit there and you get an insight into how a local over there worships. Next, let's come to one of the most important aspects of traveling, and that is food. Now, Malaysia can truly be a paradise for foodies, specifically non-vegetarians, क्योंकि इतने सारे options हैं. Honestly, you don't even, like, if you're a non-vegetarian, the street food is so much and there's so much variety कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. And speaking of street food, there's a street called Jalan Alor. Jalan Alor is the most famous, street food market in Kuala Lumpur. So make sure you go there. जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे honestly ज़्यादा options नहीं दिखे थे. There was, in fact, this steamer full of momos, and there was not a single veg momo. So that was disheartening, and I ended up eating sweet corn over there. And बस एक stall था जहाँ पे मुझे फ्राइड बनाना मिला, फ्राइड स्प्रिंग रोल मिले, मतलब वेजिटेरियन आइटम्स भी मिली. बनाना फ्रिटर्स बोलते हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी फेमस इन मलेशिया. सो फूड की अगर मैं बात करूँ तो आई फील लाइक नॉन वेजिटेरियंस के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड रिकमेंडेशंस नहीं है, बट कुछ
फूड आइटम्स है जो आपको ट्राई करने ही चाहिए, जैसे कि नासी लेमाक. बेसिकली इट इज़ राइस मेड इन कोकोनट मिल्क विद श्रेडेड श्रिम्प, एग्स एंड अ फैंसियर वर्जन ऑफ इट कैन ऑल्सो हैव चिकन. सो डिपेंड्स ऑन वॉट यू वांट हैव, दैट इज़ देयर. देन डिजर्ट की अगर मैं बात करूँ जो वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं, देर इज़ चेंडोल जो मलेशिया में ही जिसका ओरिजिन हुआ है. आई ऑनेस्टली डिडंट प्रेफर इट मच बिकॉज आई एम नॉट अ फैन ऑफ कोकोनट मिल्क, बट इट्स अ ट्रेडिशनल डिजर्ट एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई फॉर योर सेल्फ. एंड अगर मैं वेजिटेरियंस की बात करूँ तो आई फील लाइक यू विल फाइंड द मोस्ट सेफ ऑप्शंस इन मॉल्स. जैसे सूर्य KLCC मुझे बहुत पसंद आया था, उसके फूड कोर्ट में बहुत से वेज ऑप्शंस थे, सर्वना भवन तक था उसमें. सो मॉल्स में आपको बहुत से वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे, सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन एक्सप्लोर देम. So that was a little about food. And moving on, number 4 on the list is shopping. So Kuala Lumpur में if shopping is on your agenda, then so Kuala Lumpur में एक golden triangle है which comprises of 3 places: Bukit Bintang, KLCC and Chinatown. So हम बात करते हैं अब Chinatown की. Chinatown में there is this street called Petaling Street, and Petaling Street is really like it's amazing for shopping and budget friendly shopping in specific. चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बैग्स हो, गैजेट्स, फूड आइटम्स, क्लोथ्स, सब कुछ आपको स्ट्रीट पे मिलेगा एट रियली रियली गुड प्राइसेस एंड इवन सोवेनियर्स और गिफ्ट्स इफ यू वांट टू कैरी फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे KL सेंट्रल मार्केट भी है, सो आप वहाँ जा सकते हो. अगेन वहाँ पे भी आपको बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी टू एक्सपीरियंस एंड टू बाय फॉर योर सेल्फ. सो शॉपिंग आप वहाँ कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू लुक एट हाई एंड शॉपिंग एंड सम लग्जरी शॉपिंग इफ यू लुकिंग फॉर, देन ऑफ कोर्स देयर आर malls like Surya KLCC and Pavilion like I mentioned before. Number 5 on the list are the incredible day tours that happen from Kuala Lumpur. तो अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से सिर्फ Kuala Lumpur में रहते हो, जैसे मेरा भी केस था, I was there for 3.5 days and 2.5 days तो मैंने Kuala Lumpur में ही स्पेंड किया और उसके साथ साथ डे टूर किया. सो Kuala Lumpur से बहुत से फेमस डे टूर्स होते हैं, जैसे द डे टूर टू Malacca, डे टूर टू Genting Highlands, Cameron Highlands. सो बहुत सी जगहें हैं. सो सी फॉर योरसेल्फ विच प्लेस इंटरेस्ट्स यू द मोस्ट एंड आप इजीली बस ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डिड द डे टूर टू Malacca एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट डे. एक बस ली मैंने, बस within 2 hours I reached Malacca and एक दिन में आराम से उस सिटी को भी कवर कर लिया. सो आई फील लाइक द डे टूर्स कैन बी अमेजिंग. आप जो बस की डिटेल्स है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो या फिर आप एक्चुअली में बस स्टेशन जाके वहाँ पे बहुत सारे कियोस्क होते हैं, वहाँ से आप टिकट ईजिली ले सकते हो. सो सी फॉर योरसेल्फ इफ यू वांट टू डू अ डे टूर फ्रॉम Kuala Lumpur. Next is to experience the night life in Kuala Lumpur. So like I said, Kuala Lumpur is very very hustling and bustling city and एक area है in specific called Bukit Bintang. Bukit Bintang पे मॉल्स भी हैं, जैसे पवेलियन मॉल वहीं पे है, लेकिन उसके साथ साथ बुकित बिंतांग में एक जगह है कॉल्ड चंगकाट स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत से पब्स है, बहुत से बार्स है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर पार्टिंग और इफ यू आर लुकिंग फॉर नाइट लाइफ इन Kuala Lumpur, that's the place. Changkat is the place that you should definitely hit. And if you think that Kuala Lumpur is all about tall buildings and malls, then you might be wrong because Kuala Lumpur does have its own share of nature as well. So the last one on the list are the parks of Kuala Lumpur. So जैसे कि बहुत सारे parks हैं, KL Eco Park एक है which is right opposite to KL Tower. Then there is this most famous park, KLCC Park. KLCC Park के सूर्य KLCC के पास ही है. इनफैक्ट वहाँ पे नाइट टाइम पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल टू सी. And KLCC Park can be an amazing place, specifically if you're traveling with family, specifically if you're traveling with kids. They will really, really enjoy. There are fountains over there, swings over there, and of course an amazing view of the Petronas Towers. So that is great. Then there are botanical gardens. So a lot of gardens. Honestly, I couldn't unfortunately explore any of the gardens because I didn't have much time there. But I feel like KLCC Park definitely you can go. These were the top 7 experiences to do in Kuala Lumpur, and in no way I'm saying that these are the only things you should do or this should be the only video that you should watch. I would highly recommend Malaysia जा रहे हो तो और videos देखो और research करो, see for yourself what interests you the most. एंड Kuala Lumpur में आई थिंक 2 दिन आपके पास भी होते हैं तो सफिशेंट है. 2 दिन में आप easily Kuala Lumpur एक्सप्लोर कर सकते हो. In fact, I also want to mention that Kuala Lumpur has some of the very very budget friendly yet luxurious options to stay.
So even though I was traveling solo, thankfully the Malaysia leg of my trip was not exactly solo because I had met someone at Singapore का hostel and we planned to go to Malaysia together. And क्योंकि हम 2 लोग थे तो हमने एक होटल में बुकिंग की थी जहाँ पे एक infinity pool था, rooftop infinity pool था, having an amazing view of the entire city. So Kuala Lumpur पे rooftop infinity pool होना with the towers as a view is very common, and you can like find it on booking.com, and you can find really budget friendly options like that. So yes, make good use of that, make good use of this video as well. I hope you found it useful. Share it with someone who's planning a Malaysia trip. Like this video, subscribe to my channel because I am bringing a lot of such videos from other South Asian countries. Comment down below and let me know if you have any more questions. I'll be happy to answer. And that's it from my side. I will see you in the next video. Bye.